Good evening, kids. In today's class, we are going to discuss about the JEE Mains previous year question paper 2024 January shift. The chapter name is The Alternating Current. Please do like, share, and subscribe our channel. Okay, let me start the question. First, in series LCR circuit, the capacitance is changed from C to 4C. To keep resonance frequency unchanged, the new inductance should be. So here is asking about the LCR circuit. So it contains inductance, resistance, and capacitance. And this is connected to an AC source. The capacitance is changed from C to 4C. To keep the resonance frequency unchanged, how much it has to be, how much the inductor has to be raised. The capacitance is changed to 4C. The resonance frequency is F0. Okay, like हम सीधा resonance frequency का फर्स्ट सर्क्यूट में फॉर्मूला क्या है? F0 equal to 1 by 2 pi LC. सेकेंड सर्क्यूट में एल डैश का वैल्यू पता नहीं, एल डैश फाइंड आउट करना है. तो हम कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज कर रहे हैं. कितना चेंज कर रहे हैं हम? चेंज फ्रॉम C to 4C. देन एल डैश कितना होगा? एल डैश का वैल्यू, तो F0 इसका F0 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. दिस विल बी 2 pi LC L dash C 4C. तो इसका होगा नो L dash 4 L dash should be equal to L और L dash equal to L by 4. कितना हम रेड्यूस करना है यहाँ पे? इसका पिछला वैल्यू कितना था? L था. अब L को हम कितना कर चुके हैं? हम L dash by 4 हो चुका है और L by 4 हो चुका है. तो कितना रेड्यूस हुआ? पहले L था, now the value is L by 4. So how much it got reduced? Reduce means कितना घट चुका है और कितना कम हो चुका है. So we'll do one thing. L initial value L, final value L dash. Delta L calculate करेंगे. This will be delta L. Delta L कितना हुआ? 3L by 4. Reduce means here कितना कम कर सकते हैं हम. और बेटर टू टेल आपका हिंदी में कितना घट चुका है, कितना कम कर सकते हैं हम, कितना कम हो चुका है. तो 3L by 4. पहले वैल्यू कितना था? L, अब L by 4. तो कितना रिड्यूस हुआ? 3L by 4 रिड्यूस्ड. तो दिस विल बी आवर आंसर. आई थिंक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड. यहाँ पे रिड्यूस्ड थोड़ा वर्ड लिटिल बिट लॉट ऑफ कंफ्यूजन. थोड़ा आप एग्जाम में जब आप पढ़ रहे हो ना, लिटिल बिट यू हैव टू बी अलर्ट. इंक्रीज्ड, रिड्यूस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. ए ट्रांसफॉर्मर has an efficiency 80% and works at 10 volt 4 kilowatt. If the secondary voltage is 240 volt, then the secondary current in the coil is asking. So transformer, basic transformer का working, a primary coil है, and we are discussing step up transformer, and ये वाला secondary coil है. Current in the secondary coil. रेजिस्टेंस के कार में कुछ भी पता नहीं. ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी इज टेलिंग. देखेंगे व्हाट डू मीन बाय एफिशिएंसी. वर्क्स एट 10 वोल्ट एंड 4 किलोवाट. इसका वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट. ये प्राइमरी वोल्टेज है. और इस यहाँ पे प्राइमरी का पावर कितना दे चुके हैं? 4 किलोवाट.
देन सेकेंडरी का वोल्टेज कितने में ऑपरेट कर रहा है, 240 वोल्ट। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न सेकेंडरी बारे में कुछ भी पता नहीं है, पावर के बारे में पता है। So transformer का power, transformer is a device which will obey the conservation of energy principle. Means जितना power secondary में है, वही power primary में रहता है. Power in the primary equal to power in the secondary. But what is the problem is 80% of efficiency. Means थोड़ा बहुत यहाँ पे power it will get lost due to coupling. Due to coupling losses it has become 80%. Means primary में कितना power है? Ideal transformer में पावर अक्रॉस प्राइमरी शुड बी इक्वल टू पावर अक्रॉस सेकेंडरी। जितना यहाँ पे पावर प्राइमरी में वो सारे सब कुछ ट्रांसफर हो जाता है, बट इज टेलिंग 80% एफिशिएंसी मींस देयर इज 20% इज लॉस्ट। हियर विल राइट इट, 20% is lost due to coupling. So therefore we can't write power in the primary equal power in secondary. In fact power in the primary कितना है 4 किलोवाट। Power in secondary efficiency 80% means 0.8% of power in the primary into 4 into 10 to the power of 3. Then what is the current? So we can write like this. Power in the secondary should be equal to IP into Vs, 0.8 into 4 into 10 to the power of 3. IP का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो सेकेंडरी का वैल्यू कितना दिया है 0. So this will be 8 into 4 into 10 to the power of 2. 8 into 4 into 10 to the power of 2 by 240. इसका हम कैलकुलेट करेंगे। ये हुआ 30, बाद में दिस विल बी 4 by 30, 2 by 15 into 10 to the power of 2, 10 to the power of 2 100 कर देंगे हम। तो दिस का हुआ 3 और दिस विल बी 20। सो 40 by 3, 40 by 3, 13.33 ampere. Small idea. For ideal transformer, power across primary should be equal to power across secondary because of loss in power. So power in secondary will be less than power in the primary. Simple idea transformer ka. Then always power is what? Current into voltage. Just basic formulas याद कर लो, it will be easier for you. Next problem ले लेंगे। Primary side of transformer. Let me draw the transformer. Primary side. It is connected to ट्रांसफार्मर में दो तरह के रहते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। स्टेप डाउन बोले तो सेकेंडरी का वोल्टेज अगर प्राइमरी से कम रहे तो उसको हम क्या बोलते कि स्टेप डाउन बोलते हैं। अगर प्राइमरी का वोल्टेज सेकेंडरी से कम आई बोले तो देन इट बिकम स्टेप अप। सो हियर प्राइमरी का वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। प्राइमरी साइड ऑफ ए टाइमर, इसको हम प्राइमरी बोलते हैं। ये जो है ना दिस विल बी सेकेंडरी। Connected to load resistance is connected to secondary side. This is RL 46 ohm. यहाँ पे कितना पावर कंज्यूम हो रहा है? So we'll calculate this IS, यहाँ पे IP. The turn ratio of primary to secondary, number of turns of primary to secondary is 10 by 1. Then I think आप अगर आप what is the power directly power consumed in it बोले तो लोड में
this called as load resistance. This in this load resistance, how much of power consumed? मीन्स यहाँ पे कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, लोड में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है. कौन कंज्यूम करता है? जब एक करंट फ्लो हो रहा है, then this I square SL, this current square into RL is what? Power consumed. What we have to find out? Power consumed in the load equal to I square S into RL. We have to calculate IS. Then 230 volt. और अगर IS नहीं है तो then we can go for VS square RL. तो हमें यहाँ पे सेकेंडरी का वोल्टेज पता है, प्राइमरी का वोल्टेज पता है 230 वोल्ट AC. देन सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड आउट करना है. Like if you see this one, it's a step down. The turn ratio of primary to secondary is 10. It's a step down transformer. Means secondary का voltage कम रहता है. Then so how much we should write here? Bs equal to, what is the formula? The ratio Vs by Ns should be equal to Vp by Np. Vs equal to Ns by Vp by Np. Ns by Np का वैल्यू कितना है? 1/10. प्राइमरी का वोल्टेज कितना दे चुके हैं? कितना दिया है? 230 volt. So this will become 23 volt. Okay, fine. Step down transformer meaning, उसका मीनिंग क्या है बोले तो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से कम रहता है, दैट्स कॉल्ड एज स्टेप डाउन. अगर सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा रहे तो उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं. स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ का सेकेंडरी प्राइमरी से ज्यादा रहता है. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सेकेंडरी का प्राइमरी से कम रहता है. तो इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो व्हाट इज द बैकग्राउंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, number of turns of secondary less than that of primary, voltage across secondary less than primary, power across secondary equal to power of primary. Step up transformer, इसमें secondary का turns primary से ज्यादा रहता है, secondary का voltage primary से ज्यादा रहता है, और current in primary secondary सेम रहता है. और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में करंट सेकेंडरी में प्राइमरी से ज्यादा रहता है, और करंट सेकेंडरी में स्टेप अप ट्रांसफार्मर सेकेंडरी से प्राइमरी से कम रहता है, सेकेंडरी का करंट प्राइमरी से कम रहता है. तो दिस इज व्हाट एक्चुअली द बेसिक स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कॉन्सेप्ट. ओके, यहाँ ओके, नाउ कम बैक टू दिस वन. हमें यहाँ पे सेकेंडरी का वोल्टेज मालूम है, लोड रेजिस्टेंस दे चुके हैं, तो विल कैलकुलेट द पावर. सो द फॉर्मूला PL इक्वल टू VS स्क्वायर बाई RL. अगर तुमको सेकेंडरी का करंट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो तुम. तो हमें क्या है कि लगे वी नो सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पे, और लो रेजिस्टेंस दे चुके हैं, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो विल गेट द आंसर नो. तो VS स्क्वायर 23 स्क्वायर बाई 46. तो सॉल्व करने के बाद 11.53, दिस विल बी आवर आंसर. फाइन. सो दिस द कॉन्सेप्ट. जब आप स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे तो सो दिस द बेसिक फॉर्मूलास, ये सब याद रहना चाहिए. बिना फॉर्मूले आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते. आपको आपको कॉन्सेप्ट पता है, फिर भी आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते ना. तो मेमोराइज द फॉर्मूलास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. ए सीरीज LCR सर्क्यूट, एल का वैल्यू दे चुके हैं, यहाँ पे दिया है, कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है, और ए रेजिस्टेंस का वैल्यू इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स 220. पावर फैक्टर ऑफ द सर्क्यूट. डायरेक्टली यहाँ पे हम सर्क्यूट डालेंगे. पहले ए इंडक्टर,
capacitance and A वाला resistance will connect across AC source. सीरीज एलसीआर सर्किट, तीनों एलिमेंट यहाँ पे सीरीज में है. फाइन. ओके. नो. पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट पूछ रहे हैं, तो इसका हम पहले ये करेंगे. अक्रॉस इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करंट. अक्रॉस कैपेसिटर करंट वोल्टेज लैग्स करंट. अक्रॉस रेजिस्टर करंट एंड वोल्टेज दोनों इन फेज में रहते हैं. दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज वीआरएमएस. कितना? 220 वोल्ट. 50 इयर्स दे दिए है यहाँ पे. इसका वोल्टेज, इसका ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. सो यहाँ पे दिस विल बी वीएल, वीसी, ए हुआ वीआर एंड दिस इज आईआरएमएस एंड ए वाला वीआरएमएस. तो इसका वोल्टेज ट्रायंगल वीआर, वीएल माइनस वीसी, वीआरएमएस, ए फेज एंगल. पावर फैक्टर के बारे में पूछ रहे हैं. देन इससे इसके वोल्टेज ट्रायंगल से इंपिडेंस ट्रायंगल प्लॉट करेंगे. इंपिडेंस ट्रायंगल ए वाला जेड आर ए एक्सएल माइनस एक्सी. तो यहाँ पे हम cos phi पावर फैक्टर को ही what it is called as cos phi is called as power factor here. This angle is called as a phase angle. This will become r by z, r by root of r square xl whole square. So xl के बारे में, xc के बारे में do we know have any values? अब इसको कैलकुलेट करेंगे. ओमेगा एल, ओमेगा कितना हुआ? 2 पाई एफ एल. एक्सी का वैल्यू कितना? 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय 2 पाई एफ सी. इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है चेक करेंगे पहले. 1 बाय 2 पाई रूट ऑफ एल सी. एल का वैल्यू कितना है? 100 पाई. सी का वैल्यू 10 माइनस 3 पाई. टू इंटू 0.1 100 पाई पाई मिली एंड्रिया. तो थोड़ा वैल्यूज दोबारा कैलकुलेट करेंगे. 10 टू पावर ऑफ -3 हुआ. सी का वैल्यू 10 टू पावर ऑफ -3 बाई पाई. कुल मिला के सब पाई पाई, ये पाई कैंसिल हो जाता है. ए पाई और ए पाई इससे कैंसिल हो जाता है. 10 टू पावर ऑफ -3 10, 10 टू पावर ऑफ -3 10, 10 टू पावर ऑफ -4 10 टू पावर ऑफ -2. बाहर कितना? तो टोटल 10 टू पावर ऑफ -2, 10 टू पावर ऑफ -2 ये 100/2 50 इयर्स. तो सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वैल्यू कितना है? 50 इयर्स. अप्लाइड वोल्टेज कितना है? 50 वोल्ट. 50 years. When it be resonance? When applied voltage becomes equal to resonant frequency of circuit, then it is said to be resonance. Fine. So therefore, the circuit is in resonance. At resonance, what is the power factor? Should be equal to 1. At resonance, XL equal to XC. अगर XL equal to XC means this will become cos phi equal to R by root of R square. R by R. So power factor का value 1. This is a basic idea resonance का.
यही से हम फॉर्मूला यहीं से डिराइव करते हैं. Okay, at resonance, power factor is 1 and the power dissipated will be maximum. Just simple idea of the series resonance. अगर आपको directly पता है theoretical information that at resonance power factor will be 1 means directly यहाँ पे आपको आंसर 1 लिख दीजिए. नहीं तो कैसे डिराइव करना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. In an AC circuit, voltage and current respective, the average power dissipated in one cycle. पहले क्या क्या पता है. ए वाला तो फेज एंगल है, फेज एंगल ऑफ सर्किट. ये तो ओमेगा वैल्यू है. दिस इज आई एम, दिस इज वी एम. एग्री दिस. सो यहाँ पे वी एम का वैल्यू कितना हुआ. वी एम इज इक्वल टू 100 वोल्ट. इससे हमें वी आर एम एस मिलेगा. वी आर एम एस कितना हुआ. वी एम बाई रूट टू, 100/√2. यहाँ पे आई एम का वैल्यू कितना है. 100 एम्पियर. आई आर एम एस का वैल्यू कितना है. आई एम बाई रूट टू, 100/√2. ओमेगा का वैल्यू 100. यहाँ पे दे ओमेगा टी. ओमेगा टी ये जो एंगल यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ना, सो दिस इज द फेज एंगल. सो इसको हम फेज एंगल ऑफ सर्किट बोलते हैं. लुक एट यहाँ पे आप. करंट लीड्स द वोल्टेज इन द गिवन सर्किट. करंट लीड्स द वोल्टेज. So what is the average power dissipated? Average power dissipated equal to VRMS, IRMS, cos phi. VRMS का वैल्यू कितना है. 100√2. IRMS का वैल्यू यहाँ पे 100√2. Cos of pi by 3. This will be यहाँ पे 100 into 100 to cos pi by 3. Cos 60 1/2. So current is in milliampere. एक थोड़ा वैल्यू वैल्यू यहाँ पे लगा देता हूँ. 100 मिली एम्पियर बोल तो 10⁻⁻3. यहाँ पे 10⁻⁻3 एडजस्ट कर लेंगे. 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻3, दिस इज 1/2. कुल मिला के कितना हुआ. 10/4. सो दिस विल बिकम 2.5 watt. ये जो एवरेज पावर डिसिपेट हो रहा है अक्रॉस द रजिस्टर. सर व्हाट इज द सर्किट. सर्किट क्यों नहीं ड्रॉ करें हम. ओके, वी कैन ड्रॉ द सर्किट. यहाँ पे तो ये करंट लीड्स द वोल्टेज. सो दिस द रजिस्टर, दिस द कैपेसिटर, दिस द रजिस्टर. ओके, आरसी सर्किट. दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी. नॉट दिस वन ओनली, दिस वन ऑफ द पॉसिबिलिटी. यहाँ पे कौन डिसिपेट करता है. रजिस्टर ओनली विल डिसिपेट द पावर. इन एसी सर्किट में कौन पावर डिसिपेट करता है. रजिस्टर ओनली. सिंपल दिस पर्टिकुलर ए तो ए फॉर्मूला तुमको याद रहना चाहिए. और सर एनी अदर फॉर्मूला इज देयर. एवरेज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर. से हमें आई आर एम एस वैल्यू पता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू पता नहीं यहाँ पे इंफॉर्मेशन में. ओके सर, देन वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस क्या होता है. देन इट विल बिकम जेड आर. वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड विल बिकम VR equal to IRMS into R. VC equal to IRMS into XC. Okay, agreed? Huh? This is the Ohm's law. VRMS into IRMS will not become R, will become impedance. VR equal to IRMS into R. This is Ohm's law across resistor. Voltage drop across resistor equal to IRMS into XC. ओके किड्स, लाइक ए सिंपल फॉर्मूलास तुमको यहाँ पे
एनालाइज करना है, सो द क्वेश्चन विल बी वेरी इजी। इनफैक्ट आपको ये इक्वेशन, साइनोसोडियल इक्वेशंस ड्रॉ करने का जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली टेक हेल्प ऑफ दिस बेसिक फॉर्मूला। I will take the next question. Primary coil of a transformer is connected to 220 volt AC. This is the primary coil. Okay, fine. This is connected to 220 AC volt. Then primary and secondary turns of transformers are 100 and 10. यहाँ पे हम लिख लेंगे प्राइमरी का टर्न्स कितना है 100, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ प्राइमरी। सेकेंडरी का टर्न्स कितना है 10। Secondary coil of transformer is connected to two series resistance 5, 15 kilo ohm, 7 kilo ohm, as shown in figure. The output voltage, यहाँ पे आप आउटपुट वोल्टेज पूछ रहे हैं, तो हमें ये सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड आउट करना है एंड हमें प्राइमरी वोल्टेज पता है, नंबर ऑफ टर्न्स का सेकेंडरी यहाँ पे इन्फॉर्म कर चुके हो एंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सेकेंडरी का भी मालूम है, तो यहाँ से हम voltage across secondary coil will find out. Then we can use the voltage drop. Potential divider will find out the drop across 7 kilo ohm. ये जो है ना, this circuit is primary, this circuit is secondary. Then what is the formula? Voltage drop across secondary equal to number of turns of secondary into number of turns of primary into primary voltage. Then number of turns का secondary कितना है 10, that of primary 100, 8 to 30 volt. Then voltage drop across secondary will be 23 volt. Then potential divider formula. Then the drop V naught should be equal to voltage across secondary into 7 kilo by 15 into 10 to the power of 3 plus 7 into 10 to the power of 3. सर लगे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हम, व्हाट इज दिस फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख रहे हैं। वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला अगर आपको याद रहे तो वेरी इजी है। इसका वोल्टेज कितना है V2, व्हाट इज द फॉर्मूला I, व्हाट इज I is equal to V by R1 plus R2. Ohm's law across this resistor. What is Ohm's law? Ohm's law will be V2 equal to I into R2. VR2 by R1 plus R2. This is the formula. Similarly, V1 equal to IR1. VR1 by R1 plus R2. ये जो आइडिया है ना, दिस इज द पोटेंशियल डिवाइडर कॉन्सेप्ट। एसी और डीसी दोनों सर्किट्स को सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला। नाउ यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। दिस विल बी 23, 7, 15 plus 7, 23 into 7, 15 plus 7, 22. इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 23 into 7, 23 into 7, 161 by 22. 7.3, 32 volt or nearest 7.3 volt. Now very important, ट्रांसफॉर्मर जस्ट 1 hour में आप ऐसा समझ के रिवाइज कर सकते हैं। फिनिश होल बाद में 3 फॉर्मूलास है,
को 3 फॉर्मूला याद करने पर हो गया फिनिश. दिस चैप्टर इज मैनेजेबल. This complete AC circuit is manageable. We have to calculate the drop across this 7 kilo. V not पूछ चुके, so answer is 7.3 volt. Next question ले लेंगे. A series LR circuit connected across AC source. Series LR circuit. Resistor, inductor और AC source है. इसका EMF कितना लगे? 25 sin 1000. फाइन. पावर फैक्टर कितना यहाँ पे 1/√2 दे दिए हैं. पहले पहले सो दे रजिस्टर इंडक्टर LR सर्क्यूट यहाँ पे सोर्स को कनेक्ट कर चुके हैं. इसका पावर फैक्टर कितना है? 1/√2. पावर फैक्टर इज 1/2. cos phi1 is 1/√2. if the source of EMF is changed to the new power factor of circuit, इसका नया पावर फैक्टर कितना होगा? हम क्या चेंज कर रहे हैं? वी आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी. देन व्हाट इज द पावर फैक्टर? पावर फैक्टर अगर आप इस सर्क्यूट ड्रॉ कर इंपीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, एक्सएल और ए व आर. So this is the one basic formula. Cos phi is equal to R by Z, R by root of R square plus XL square. आगे यहाँ पे ऐसे करेंगे. Cos phi 1 R square plus omega square L square. हमें क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे? पावर फैक्टर 1/√2. इसका वैल्यू कितना हुआ? 1/√2 R रूट ऑफ R स्क्वायर. ओमेगा का वैल्यू कितना है? 1000. ओके, दिस सेम वैल्यू ले लेंगे. R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर. नेक्स्ट इसी सर्क्यूट दूसरा सर्क्यूट में रजिस्टर, इंडक्टर, पावर फैक्टर. इसका नया पावर फैक्टर का वैल्यू कितना है? तो इसका वैल्यू 20 साइन ऑफ 2000. इसका नया वैल्यू एक्सएल डैश और एक्सएल नॉट समथिंग इंडिकेट करेंगे. नया इंपीडेंस वैल्यू, इसका इंपीडेंस वैल्यू Z0. आर का वैल्यू इट विल रिमेन सेम. तो cos phi 2 वैल्यू और ओमेगा का वैल्यू कितना? अर्लियर कितना था? ये 1000 था. अब ओमेगा वैल्यू कितना कर रहे हैं हम? 2000. सो वी आर डबलिंग द ओमेगा. 2 ओमेगा हम कर रहे हैं. तो दिस विल बी R square equal to 2 omega L whole square. XL naught whole square. R by root of R square 2 omega L whole square. R by R square 4 omega L A वो 4 XL square है. यहाँ पे हम और एक फॉर्मूला लगाएंगे. tan phi 1. tan phi 1
will become XL by R. पावर फैक्टर 1/√2. सो मीन से फेज एंगल का वैल्यू कितना होगा? cos phi 1 अगर ये हुआ 1/√2 बोले तो phi 1 का वैल्यू कितना है? π/4. तो tan π/4 इक्वल टू 1. तो XL इक्वल टू R. यहाँ पे हम वही वैल्यू यूज करेंगे. दिस विल बी R root of R square 4R square हुआ. This will become 1/√5. So A हुआ नया पावर फैक्टर. उसका वैल्यू कितना है? 1/√5. ए हुआ हमारा आंसर. आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन है. आपका सब दिस ट्रायंगल ड्रॉ करने भी कॉन्सेप्ट है. इवन आप ये सर्किट ड्रॉ नहीं कर रहे, ओके, नो प्रॉब्लम, डजंट नीड इट. इसलिए कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए ये सर्किट ड्रॉ करना पड़ रहा है. आपको एग्जाम में पावर फैक्टर इम्पिडेंस ट्रायंगल में पावर फैक्टर क्या है? cos phi व्हाट? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज R/Z. यहाँ से शुरू करना है. एंड सम इंफॉर्मेशन यहाँ पे है कि लाइक वैल्यू दे चुके हैं 1/2. तो यहाँ पे हम एक्सेल एंड आर के बारे में कुछ भी पता नहीं है. सो वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ दिस 1/√2 वैल्यू एंड वी आर गेटिंग रिलेशन बिटवीन एक्सेल एंड आर. वेरी गुड क्वेश्चन. थोड़ा बहुत लाइक अननेसेसरी इन एग्जाम्स यू शुड नॉट ड्रॉ दिस डायग्राम. यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने से मेरे को आई टू मेक स्टूडेंट्स टू थिंक. जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो मैं समझ पाने के लिए या मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ. अदरवाइज इन एग्जाम यू शुड ड्रॉ ओनली दिस ट्राइंगल. अगर ट्राइंगल भी तुम्हें याद है बोले तो डायरेक्टली ये इक्वेशंस लिख दो. हाँ, अगला क्वेश्चन ले लेंगे. An alternating voltage 220 into sin 100 is applied to purely resistive load. The time taken for the current to rise from half of the peak value to peak value. Time taken by the current to rise from half of the peak value to the peak value. What is the expression for current? I equal to V of T by R. V of T is 220. R का वैल्यू कितना हुआ? 50. 22/5. ये जो पीक वैल्यू है, टाइम टेकन फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू. देन एक डायग्राम प्लॉट करेंगे. दिस इज द साइन ग्राफ. This is the peak value. Time taken from year to year. We have to calculate this time. This is IM. This is I of T. What is this time? A to T/4, no? Time taken for the current to become from 0 to IM/0 to IM will be T/4. अब ये टाइम पूछ रहे हैं. How much of time it will take for the current to become IM/2 to IM? हम क्या करेंगे? लेके time taken for 0 to IM is T/4. Then we'll calculate this time taken for the current to become 0 to IM. ये टाइम कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे T/4. देन विल गेट दिस वैल्यू. ओके, यहाँ पे
call this is T2. This is T1. यहाँ पे मैं indicate कर रहा हूँ. No need of diagrams in exam. In exam, आपको directly you have to take help of mathematics here. Okay, now what is the time taken T by 4? Omega का value कितना है? Omega यहाँ पे omega value is 100 pi. 2 pi by T equal to 100 pi. T equal to 2 by 100. This will be 0.02 seconds. T by 4 value. T by 4 value will be 0.005 seconds. 1/4 of this value. T by 4. T by 4. This will call it as say some T naught. T naught is how much? T naught will be 1/4 of time period. T by 4. 0.02 by 4. 0.005 or 5 milliseconds. This is the time taken for 1/4 of cycle. Okay, fine. Now time taken for the current to become 0 to Im by 2. Im by 2 is this one. Im is this one. Im by 2. 22 by 5 off of it equal to 22 by 5 equal to sine of 100 pi t. Then this will become sine inverse of 1 by 2 equal to 100 pi t. Sine inverse of 1 by 2 will be pi by 6. 100 pi by t. This time is t1. इसका pi cancel हुआ. t1 equal to 1 by 600. 0.01 by 6 seconds. Okay, fine. So 1 by 6 value, 1 divided by 6, 0.167. Zero point zero zero one six seven. Okay, this will become 1.67 milliseconds. We'll calculate T2 now. T naught is equal to T1 plus T2. Okay, fine. Yeah. No, T naught value कितना है? 5 milliseconds. T1 value आप एक कैलकुलेट कर चुके हैं 1.67 मिली. T2. तो T2 आपको करीब 3.3 milliseconds. This will be your answer. A very simple problem. There's a background. You should have this diagram background, little bit easier. I'll take the next question. A power transmission line feeds input at 2.3 kilovolt to a step down transformer. यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मर कितना वोल्टेज 2.3 किलोवोल्ट. दिस इज प्राइमरी वोल्टेज. इसका नंबर ऑफ टर्न्स P. स्टेप डाउन नंबर ऑफ टर्न्स में सेकंड में कम रहना चाहिए NS. The output power delivered is
230 वोल्ट, ये सेकेंडरी वोल्टेज हुआ। यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, IS। प्राइमरी करंट कितना है, IP। द करंट इन द प्राइमरी इज 5 amperes. 90% efficiency. Some losses are there. Then what is the power in the primary? पहले हम, okay, this one is primary winding having 3000 turns. So we are having number of turns will be 3000. The current in the primary is 5 ampere. प्राइमरी का पावर कैलकुलेट करेंगे, द आउटपुट करंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। सो हमको यहाँ IS वैल्यू फाइंड आउट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IS। So first power in the primary of the transformer, that should be equal to power in the primary into voltage applied across primary. This is the voltage applied across the primary. Current flowing in the primary 5 ampere. यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, P इंटू 2.3 इंटू 10 to power of 3, 23, 5 इंटू 23 इंटू 10 square, 115,11500 watt. This is the power in primary. Efficiency कितना है, 90%, मीन्स एक 10% यहाँ पे लॉस हो रहा है। सर व्हाट आर द लॉसेस, मेनी लॉसेस, कपलिंग लॉसेस, कॉपर लॉसेस, वाइंडिंग लॉसेस, फ्लक्स लॉसेस, ट्रांसफार्मर का मेनी लॉसेस रहता है। तो बिकॉज ऑफ दैट एफिशिएंसी इज नॉट 90%, देन पावर इन द सेकेंडरी should be 90%, means 90 by 100 into power in the primary. Okay, 0.911500 into 0.9. Power in the secondary is now 10350 watt. ये power in the secondary हो। नेक्स्ट इसका पावर डेलिवर्ड कितना है, आउटपुट 230 वोल्ट। देन पावर डेलिवर्ड इन द सेकेंडरी इक्वल टू करंट इन द सेकेंडरी, वोल्टेज इन द सेकेंडरी। करंट इन द सेकेंडरी इज वही कैलकुलेट करना है हमें। पावर इन द सेकेंडरी कितना है, 10350। करंट में सेकेंडरी अननोन, वही तो कैलकुलेट करना है हमें, द आउटपुट करंट। दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट करंट। वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इज 230 वोल्ट। Now 1035 divided by 23, so will become 45 ampere. Fine. So a second, इसी को हम आउटपुट करंट बोलते हैं। से लेकिन प्राइमरी ट्रांसफार्मर में इस सेक्शन को, सेकेंडरी सेक्शंस को हम आउटपुट बोलते हैं, प्राइमरी सेक्शंस को हम इनपुट बोलते हैं। प्लीज डू रिमेंबर, ये जो प्राइमरी सेक्शन है इसको हम इनपुट सेक्शन बोलते हैं, ये सेकेंडरी सेक्शन है इसको हम आउटपुट बोलते हैं। दिस विल बी सेकेंडरी, ये लेफ्ट साइड वाला प्राइमरी, इसको हम इनपुट सेक्शन बोलते हैं। हम सेकेंडरी सेक्शंस को आउटपुट बोलते हैं। यहाँ पे वेरी गुड क्वेश्चन इज देयर। AC voltage is applied to LCR circuit which drives a current of this much. The average power dissipated. Very simple, like यहाँ पे आप सर्क्यूट ड्रॉ करने का जरूरत भी नहीं है ना, ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल मैथमेटिकली। ये रजिस्टर हुआ, LCR सीरीज सर्क्यूट, यहाँ पे आपको इंडक्टर, कैपेसिटर, AC सोर्स, वोल्टेज अप्लाइड कितना
20 sin 200 पाई टी हम अप्लाई कर रहे हैं। करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। दिस इज आर एल सी। एवरेज पावर कौन डिसिपेट करता है यहाँ पे, पावर जो भी पावर डिसिपेट करता है वो रजिस्टर ही है। तो हमें यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर पता नहीं है। तो व्हाट आर द वेरियस फॉर्मूलाज, पावर डिसिपेटेड in the circuit is equal to average power dissipated IRMS square into R. Okay, fine. और VR square by R, और दूसरा फॉर्मूला है VRMS IRMS cos phi। VRMS बोले तो VM by root 2, IRMS means IM by root 2। और यहाँ पे व्हाट इज VM, VM कहाँ पे है, दिस इज VM, इसको ही हम VM बोलते हैं। And इसी को हम IM, because pronunciation will be, this will be I equal to IM sin omega phi। Symbols very important। So ये वाला हुआ ओमेगा, ये वाला फेज, इसको हम IM बोलते। ये वाला हुआ ओ VM, ए ओमेगा हुआ, एग्रीड। cos phi कितना, cos pi by 3। VM का वैल्यू कितना है, 20 रूट 2, IM का वैल्यू 10 रूट 2, cos pi by 3, cos 60 1 by 2। तो 200 2 into 1 by 2। एवरेज पावर डिसिपेटेड, तो ये हुआ कितना, 200 by 4, 50 वैट। ये सर्किट ड्रॉ करने का जरूरत नहीं एग्जाम में, फॉर्मूलास, थ्रू फॉर्मूलास ही इसको आप मैनेज करना चाहिए। और वीआरएमएस यहाँ पे इक्वेशन दे दी, यहां से आपको पता करना है ओमेगा सभी, cos phi। Okay, fine. These are the some problems related to. Okay, what all we have discussed. This was a January shift, 2024. So once again, I'll request all students to read all the concepts. Okay, then next, revise all formulas. Then solve PYQ. This is a basic idea. यहाँ पे आपको AC में some terms are there like resistance, reactance, capacitive reactance, phase angle, power factor, average power dissipated, VRMS, impedance। इसके बारे में यू शुड हैव द क्लैरिटी। अगर आपको ये जो टर्म्स है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, और ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। अगर अगर ये टर्म्स आपको याद रहे तो इसका मीनिंग, इन डेप्थ मीनिंग, और कौन से इक्वेशन है, लाइक इम्पिडेंस एंड पावर फैक्टर कैसे रिलेशन है, VRMS and average power, how they are related, then average power and current, how they are related। अगर आपको इनके बारे में पता है बोले तो then you can manage। So from where do all will get these ideas, या पढ़ने पे you should read एक दो बार अगर चैप्टर पढ़े तो, then you'll get some basic idea what is the meaning of them, XL, XC, phase angle, power factor, average power, VRMS, impedance, resistance, लैग, लीड, इसके बारे में आपको आइडिया रहता है। देन फॉर्मूला याद कर सकते तुम।
अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, फॉर्मूलास याद है, फिनिश, और अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखते ही मैं ये सब लिख रहा हूँ ना, दिस वॉज द मेथड। देयर नो अदर सिंपल थिंग। You have to read 2, 3 times, 4 times, 5 times. Take textbook or take teacher notes. Read it. When you read again and again, no, you'll get a better picture. Fine. So we'll take the next chapter, electromagnetic induction. Okay. Till then, bye. Take care. So all the best. Prepare well for exams. Thank you all of you. Thanks for great support. कल मिलेंगे. Yeah. Bye.